Good morning, friends. Let's today talk about the new topic what we are going to see, the unit number three after the cost center and the cost category. The next topic which I want to cover today in the session is unit of measurement. I know the unit of measurement is already discussed in the unit number two, but that is a partially discussed topic. In the unit of measurement, again, if you remember, it is very useful in case of the stock inventory or against the stock measurement. So when you are going for the accounting with inventory, the unit of measurement is become the one of the important aspect which you must know. Now here, the topic which I have covered for the purpose of the understanding, and that again I have given the heading name is unit of measurement, but it is something more than that. So you can see the title which is given here on the screen. That is how to enable an alternate unit of measurement. So it is not a unit of measurement, but the word which is having an addition, that is alternate unit of measurement. So we know how to activate the unit of measurement and how to use that unit of measurement for the purpose of activity of any journal entry purpose when we are doing the accounting with the inventory. Now let's see how this functioning and the facility of the alternate unit of measurement is going to helpful to you for the purpose of accounting with inventory. Let's see what the theory is given in the material. So the unit of measurement is very necessary for the purpose of maintaining the stock item and the accounting with the inventory. That's what I already told you. Along with the unit of measurement, the alternative measurement is also frequently used in the accounting with the inventory. Let's see how to enable this alternate unit of measurement with the tally prime. Now, for the purpose of activating the alternate unit function, you have to reach up to the point of creating a stock item while passing a particular journal entry for either purchase or sales transaction. Please try to read this sentence twice because this is very important line. Whenever you are trying to activate the alternate unit of function in the tally prime, so first of all, you have to reach up to certain point. And that is what is the point? Certain points means what? Question mark. So it says that stock item, that is a point of stock item, while passing a particular journal entry for either it can be a purchase or it can be a sales transaction. या तो परचेज या तो सेल्स का ट्रांजेक्शन आप करोगे और जब आप स्टॉक यूनिट पर्टिकुलरली क्रिएट करना चाहोगे up to that point you should be rich and then after you can go for activation of alternate unit of measurement. So for the purpose of understanding, we try to pass an entry for the purchase of 50 boxes of MCB, that is 1000 nums at the price of rupees 1500 per box from ABC Associate as on the 1st April 2020 with the invoice number 001. So it is a basic entry I have given. I have taken that is purchase transaction is given here and it is written कि हम 50 बॉक्स ऑफ एमसीबी परचेज कर रहे हैं और 50 बॉक्स में कहीं ना कहीं 1000 नम्स आते हैं सो इफ आई वांट टू डिवाइड दिस 1000 divided by the 50 it comes to 20 nums per box and the price will be 1500 per box. So price is given as per the boxes and they also mention the MCB in nums also. Date is given, invoice number is given. Let's see how it can be activated. So you can see that is a screenshot is taken for your convenience. So in the Teleprime, if I go to the voucher entry, and in that if I go to the purchase voucher, that is F9. So in the purchase voucher, particularly first of all, I will select the date. Then I will try to give the invoice number. Then it will be asking me for the party account name, that is ABC Associate. Then it will be asked to me that is purchase ledger. And definitely you should remember the layout. I am not doing the entry in the accounting mode. I am doing the entry in the voucher mode. Okay, so you remember that is on the left hand side, sorry, on the right hand side, the vertical panel which is available, whereby Control H, I think so, Alt plus H, change mode, it is visible to you, and that mode we are going to use for the purpose of this thing in order to change the layout of the journal entry purpose. So here the inventory mode is prefer. You can see my cursor is stopped at the name of item. In that you can see in my list of stock item there is no stock has been created. Okay, intentionally I'm showing this screenshot to you. The reason is because in that company I have not created any stock item, so it is very clear. Now what to do after that? So it is written create a stock item of MCB in the Telegram. Why? Because in my journal entry which is of the purchase transaction, MCB has been purchased, so let me create a stock item in the name of MCB. So second screenshot, it's showing you that is I'm at the screen of stock item creation, whereby MCB stock item I'm going to create.
You can see alias I have kept it blank intentionally. It is asking for grouping under, it is written I am under the primary, and it is asking for units. So you can see on the screen there are two units of measurement is available. I have created two units. That is first I have created the box also, that is per box, and I have created nums also that represent the number also. So you remember that is how we can go for the creation of unit of measurement, because this part is already discussed in the unit number 2. So I am not mentioning that thing right now again. If you don't remember, try to watch the video of the unit number 2, or try to recall the things which I already covered in the classroom. So you can definitely recall the things and you have the idea from where we have activated the unit of measurement. So here you can see the main point is that two unit of measurement should be on your screen. If it is not there, then you are not able to use the alternate unit of measurement functioning. Let's see what the seconds I think the next screen showing. Something is written in the para form. At the time of creating unit of measurement of number, that is number, it is unit of measurement. We want to create an alternate of measurement. So at that time, again ये चीज आपको यूनिट नंबर 2 में नहीं पता बताई थी कि alternate यूनिट कहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे, तो ये प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है. आपको एक चीज पता है, दैट इज वन थिंग यू ऑलरेडी नो, दैट इज हाउ टू गो फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सो जब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट की स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे जब स्टॉक क्रिएट करते हैं, एट द सेम टाइम यू कैन गो फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑल प्लस सी करके हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं. At the same time, I can go for creation of second unit of measurement also. But how to activate your alternate unit? So this is the point from where I can activate the alternate unit of measurement. At this time, I will press F12 button, which is showing the configuration button, and you will see the following screen, whereby you are supposed to enter yes at the second last item which is available in the screen and save it. For the purpose of saving it, I can press Ctrl plus A. So you can see the next screenshot which is showing on the screen. It is a particular F12 configuration part. You can see in the second last item, that is, it is written use alternate units. Once you activate this function, then only you are able to see a next screen. I can say next screen item, which is very useful for the purpose of the journal entry. You can see I have already done yes here, use alternate unit in this screen. Now we can see there are the two unit of measurement in the screen for the entry purpose. So you can see on the screenshot of the stock creation. So MCB, I am still there, grouping with the primary units. First of all, I have taken a box. Alternate units, I have taken a nums. Now this is a trick, that is which unit of measurement you should take first and which unit of measurement you should take second. So basically, if you remember, my entry is in terms of boxes. So I have purchased, I think so, 50 boxes, whereby MCB in nums it comes to 1000. So per box it comes to 20 nums. Okay, this is a conversion which we know how to do the conversion. Now here the price is given for box. So how to use this alternate function? So my calculation will be goes like this: 20 nums is equal to one box. So why I am getting this alternate unit of function? Why I am trying to fix one equation? Because my price will be in terms of box. Why I am using this alternate unit of measurement? Because along with the boxes, I also want to maintain the nums criteria for the purpose of accounting with the inventory. मुझे दोनों तरीके से मेंटेन करना है. मुझे बॉक्सेस कितने आए हैं मेरे बिजनेस में या तो परचेज कितने हुए, और मुझे नम्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम कितनी है वो भी देखनी है. सो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शनिंग, the alternate unit functioning is the best to use. So here the equation I have framed, that is 20 nums is equal to one box. You can see it is already there, whereby it is asking for the equation कि आपको कैसे रखना है, आपको box is equal to nums रखना है, nums is equal to box रखना है, ये आपके ऊपर है और ये आपको ही डिटरमाइन करना पड़ेगा. The tally prime is not going to say anything to you. The tally prime is not going to, I can say, convey anything to you, whether you are doing a wrong thing, whether you are making a wrong entry. No, it's a software. It is going to do its job in the better way. But the condition is you are supposed to provide the particular input, which is the right one. So this is the thing where you are supposed to be a little bit careful. Okay, let's go for the right. In the next screen, you can see after the creation of the stock item, whereby I already used the functioning of alternate unit of measurement. You can see after the saving above, one can complete the entry work. So you can see now the entry. I have taken the name of item, that is stock item MCB.
You can say in the quantity, 15 boxes has been that. Okay. And under that, in the next line, you can see the 1000 nouns is automatically coming. I'm not trying to insert any information here. Once I click 50 works, it will becomes 1000 nums. Why? You remember? I have already fixed one equation that is 20 nums is equal to 1 box. So 50 box is equal to how much nums? 1000. Okay. Rate in the next column, I will enter the rate 1500 per box. As you can see, the rate will be per box, not per piece. So the total amount comes to before GST, it comes to 75,000. And in the narration, I have written the weighing 15 boxes of the MCB, which is containing the 20 noms per box, which is purchased from ABC Associate with the invoice number so and so on so and so day. So this is the entire narration which I have used for the purpose of recording the entry. So same thing you can do while you are going for the entry work. Next is activity is given. So this is the concept whereby I can say alternative measurement is very useful. Let me show the things I can say in the entry itself. Okay, so यहाँ पे नीचे आपको दो एक्टिविटी दी है. That is first activity is in the respect of the sales and purchase transaction, but the twist is we are supposed to do it right now with GST. Whatever the sales and purchase entry we have covered up in the earlier session, this entry was without GST. So right now we are trying to touch the concept of the GST also. That is how the GST entry you can do in the Tally Prime in case of sales and purchase transaction. So the entire activity is framed for you. I think so more than how much transactions I have covered up. Maybe 12 or 15 transactions are there. And if I'm not wrong, so certain transactions of debit note and credit note are also covered here. So debit note and credit note का भी एक एक entry हमने यहाँ पे cover किया है. No doubt date has been different, but we are having a limitation as we are doing a work in the educational mode of the Telegram software. So we will use the first and second date only for the purpose of the recording this handling. No issue. That we know. After that, certain more information is given because this is the entries for the purpose of accounting in terms of purchase and sales along with GST, whereby it is necessary to have obtained the GST number of the different parties. It is given in terms of the FIMO format. So, from whichever the parties or suppliers or even the client with whom we have done the business, the GST number is also given. After that, in the next page, there is one activity for the bank transaction that we will see later on because the bank registration concept is already clear in one of the video of unit number 3, which is the first video or first part of unit number 3 that is already watched by you and already understood by you. But this is the activity for the same thing which we have covered in terms of critical bank. So that we will see later on. Let me come back to the transaction because in this sales and purchase transaction, let me read out. Because the alternative of measurement, whatever the concept I have just shown you, the same concept is required to be applied here also. If you don't apply, I can say the task will be incomplete. So let's start the reading of the activity. The name of business is given EACC, that is E-Accounting Trading Associate. Okay, that's a hypothetical name which I have taken here. You can suggest any name. You can try to do the past entry in any name of the company which you have created in your daily life. The GST number of the ESC Trading Associate is given here. So this is the GST number. I think so 58 GST number has been given. Starting with the 24, it means it represents the Gujarat. So this GST number is registered in terms of the Gujarat state from the Gujarat GST authority. GST rate has been given 5%, and all the below transactions are conducted with the Gujarat only. So there is no interstate transaction. The transaction or whatever the sales and purchase has been done by that EACC Trading Associate. That is all within the Gujarat itself. And whatever the amount of price has been given in the below transaction, it is without GST. So definitely it is not inclusive of GST price has been given. It is without GST on which you are supposed to levy the GST. Okay. One more thing I would like to clear here. You would understand the entry only if you are having the clarity in terms of the GST concept, which is already covered in the subject of element of indirect tax, whereby you are learning the concept of the GST. So you already know what is the GST, what is the input GST, what is the output GST. If you remember this concept, if you are having a clarity on this concept, then it will be very easy for you to digest the entry. Otherwise, I have to explain nothing else. Let's go for the entry.
First entry says that, say for example, it is given on 1st of October 2020. The 20 boxes of 10 ampere one way switch. So it is something in case of electrical item. Okay, not an issue. So 10 ampere one way switch containing the 20 pieces per box. So of rupees 950 per box, which is purchased from Anchor Electricals Private Limited with invoice number ABR 045. ABR-045. तो कुछ 20 बॉक्स आपने परचेज किए हैं 10 एम्पियर वन वे स्विच के, ओके, और एक बॉक्स में कितने पीसेस हैं, सो इट इज कंटेनिंग 20 पीसेस और प्राइस आपको पर बॉक्स दिया है, इससे परचेज किया है सर एंटर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया है, इन्होंने नंबर दिया है बिल्कुल दिया है और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दिया है बिल्कुल दिया है. सो लेट्स गो फॉर द एंट्री. I will come to the my Telegram software. In the Telegram software, you can see EXC Trading Associate is already open in my Telegram. So it is that in my Telegram. You can open your company or you can just create your company which is having the same name or you can do the same activity in the existing company. But for the better user, I can suggest you can go for the creation of the new company so that the every functioning how you can activate that you can have for this. Okay, let's start with this. I will go into the voucher. So in the voucher, this is the purchase entry. So I will press F9 from the keyboard. Okay. You can see here some cost center and that function is activated. So let me deactivate this thing. Because right now it is not, I can say it is not important for me to go for the cost center. So let's go now. I have pressed F11. So let me so this one. यहाँ पे आने के लिए मुझे उसके बाद ही करने देगा. Yes. You can see here is a functioning. I go into the actual configuration whereby I select the cost center. And तो by default yes मैं इसको no कर देता हूँ because I don't want cost center in my sales and budget entry right now. We have seen how the sales and budget entry is. We have already seen the concept of the cost center and the cost category. So right now it is not important for me to maintain the cost center for the sales and budget. If it is required by you, you can definitely use the cost center and cost category in terms of the sales and budget also. So that accordingly the cost center will be trying to track out the sales and purchase for you. Okay, let's go for it. The first entry. So date on the first April, invoice number, these are same APR on the 045, the same date it is invoice date entry. ABC associated जाके यहाँ पे मुझे electrical से करना पड़ेगा और electricals प्राइवेट लिमिटेड ग्रुपिंग क्या आएगा और फिर हमें रेट आएगा अगर ये आपने याद करेगा डिफॉल्ट पेड बिल में यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट गिवन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो मेरा सप्लायर है तो मैं कह देता हूँ कि सप्लायर से मुझे मैक्सिमम 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है चेक फॉर द क्रेडिट बिल का वाउचर यस कॉस्ट सेंटर का एप्लीकेबल अगर मैं यहाँ पे यस करूँगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा मुझे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल मुझे नहीं चाहिए एड्रेस आप समझ लीजिए सारी पार्टी बदला की है ट्रांसफर के पहले ही एक एजम्पशन दे दिया था कि ऑल द पार्टी और ट्रांजैक्शंस आर विल बी डन ओनली. So मैं वही समझता हूँ उनको नंबर डाल देता हूँ तो फाइल डिटेल्स है तो प्लीज यहाँ से आप विजिट कर सकते हो उसका पैन नंबर डाल सकते हैं और हाँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसा है this is all I think this is the concept which already done in the subject of element of indirect taxes whereby the GST part is also covered as per the syllabus of the element of indirect taxes concerned. And you already know the wording which are showing in the drop-down list. That is registration type. One is a composition, another is a consumer, third is a regular, and unregistered. So I will go for the register because हमने देखा था कि एंकर इलेक्ट्रिकल्स की अगर बात करें तो वो एक रजिस्टर पार्टी है. लेकिन ये चीज मैं कर रहा था उसके बाद ये चीज रह गया है तो लेट से करूँ बाद में आपको बता रहा हूँ कि हमें एक चीज करना रह गया है तो मैं एक लेबर शेयर करेगा तो एंकर इलेक्ट्रिकल्स का यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया है मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट करने के लिए व्हाट इज शॉर्टकट की शॉर्टकट की इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी ओके सो वेरीफाई द पार्टी ओके सेट ऑन द जीएसटी अगर आप यस करेंगे तो वो बहुत कुछ पूछेगा देखिए क्या क्या पूछेगा
तो रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, ठीक है। ये सारी चीज़ तो आपको पार्टी टाइप, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है। तो मैं कहूँगा ये चीज़ आपको सेट एंड ऑर्डर जीएसटी था उसको नंबर दिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू राइट नाउ। What I have done, I have created a party account, name is enter because private email. I have given the information in terms of GST registration, with the regular registration, whenever the GST number is derived state. ओके, मैं यहाँ से एंट्री को अभी उसको लीव कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज जो था वो रह गया है, कुछ फंक्शन एक्टिवेट करना है। अगर आपको याद होगा कि मैंने ये से ट्रेडिंग कंपनी एसोसिएट की बात करूँ, अगर मैं और प्लस स्क्रीन में जाता हूँ, मैं एक बार इसके ऑपरेशन स्क्रीन में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए जब मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं F11 प्रेस करूँगा, F11 क्यों प्रेस कर रहा हूँ? The thing is that I want to go for features और features में GST का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा taxation, let's see here taxation, तो यहाँ पे ऑलरेडी यस किया हुआ है, लेकिन what the thing is missing, I have not saved the GST number of this party, so मैं इसको बाकी सारी information ऐड एडिट करता हूँ, यहाँ पे मुझे BSc ट्रेडिंग एसोसिएट का GST नंबर उसको सेव करना पड़ेगा और इसीलिए मैं वो एंट्री छोड़ दूँ वहाँ पे, पहले करना चाहिए। यहाँ पे आपको ईएसएल ट्रेडिंग एसोसिएट का जीएसटी नंबर दिया है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, दे लीजिए। फिर जीएसटी रिटर्न में इसको मंथली रखता हूँ। आप आई होप आपको पता होगा द पीरियडिसिटी ऑफ द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द जीएसटी इज आइदर मंथली और क्वार्टरली। स्टेट और ऑल्टर जीएसटी रेट, मैं यहाँ पे इसको यस करूँगा, करने की जरूरत नहीं लेकिन आपको बताता हूँ। टैक्सेबिलिटी मैं यहाँ पे इसको बदल देता हूँ, टैक्सेबल है। इंटीग्रेटेड टैक्स कोई है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इंडिया टैक्स में नहीं होने वाली है, वो हम सारी की सारी जो चीज़ें इज इन टर्म्स ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी में करने वाले हैं। तो मैं 5% दे देता हूँ ताकि इसको याद है कि अगर आईजीएसटी ट्रांजेक्शन में 5% होता है, तो बाकी की चीज़ें मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी जो भी है उसको एज रख दीजिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और कंट्रोल प्लस की देखिए। चलिए अब मैं वाउचर में आ जाता हूँ, ऑफिस में फटाफट एंट्री पे आ जाता हूँ। जहाँ तक याद है एपीआर ऑब्जेक्ट 045 है, यहाँ पे आपका एंटर इलेक्ट्रिकल्स पार्टी का नाम आ जाएगा। Now here you can see this is the information which asked by the Delhi bank, is asking you very basic details, that is have you having any receipt note, because in the my MNC company, you can see the entire things has been very official it is done, so you cannot pass an entry directly. You have the information, say for example whether you have prepare any order or whether you have make any order, purchase order for that, and after you are purchasing the things or not. So this is the window whereby it is asking for the things, receipt note है या receipt details, dispatch through कौन सा dispatch कैसे हुआ है, destination क्या था, एजेंट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या था, बिल ऑफ lading यानी कि आपके पास एलआर है तो एलआर का नंबर दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास परचेज बिल आया तो उसका एलआर भी तो आया होगा। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट 30 डेज के लिए, 30 डेज का मैंने क्रेडिट पे डाला था, अगर रेफरेंस मुझे डालना नहीं है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, फूड डिटेल्स, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड इसमें लिखा है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्किपिंग इट। ओके, चलिए अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट दिखा रहा है, सप्लायर बिल फ्रॉम, तो एंकर इलेक्ट्रिकल नाम आएगा, मेरे लिए मुझे सेम रखना है, बड़ौदा का एड्रेस दे दिया है, गुजरात जीएसटी नंबर आ गया। चलिए अब ये इन्होंने परचेज क्या किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं परचेज आइटम लिख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा परचेज मटीरियल, मटीरियल तो नहीं है, मैं इसको आइटम ही रहने देता हूँ, वही रखना है, ठीक है, परचेज आइटम जीएसटी एप्लीकेबल है, मैं कंट्रोल प्लस एंटर करके देख लेता हूँ। हाँ जीएसटी एप्लीकेबल है, यहाँ पे एक चीज़ है, सप्लाई नहीं इसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक एमसीबी क्रिएट किया था, आपको जो स्क्रीनशॉट उसको दिया था ऑर्डिनेटर मेजरमेंट कंटेंट बताने के लिए, तब मैंने एक स्टॉक क्रिएट किया था एमसीबी, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टॉक क्या चाहिए, यहाँ पे जो स्टॉक का नाम है उसका नाम है 10 एम्पियर वन वे स्विच। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आई विल ट्राई टू क्रिएट अ स्टॉक आइटम हियर, आई विल गो फॉर द शॉर्टकट की, दैट इज ऑल्ट प्लस पेस्ट का फंक्शन, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, ओके, ग्रुपिंग प्राइमरी। Now again, the same conversion factor is available that which I have used in terms of alternative measurement, that is box and number. लेकिन आपको याद होगा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बॉक्स चाहिए और ऑल्टरनेट यूनिट में मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपको याद होगा यहाँ पे पीसेस दिया है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, बॉल
और हम रखते हैं इस- ये वहाँ चलिए। सो कितने पीसी इज इक्वल टू बॉक्स हो गए आपको यहाँ दिया है 20 पीसी इज इक्वल टू 1 बॉक्स। अगर 20 पीसी इज इक्वल टू 2 बॉक्स करें तो उसका कन्वर्जन से चला जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो चल जाएगा भूल जाएगा। रिपोर्टिंग यूनिट क्वांटिटी कौन सा है बॉक्स है या पीसीस है तो रिपोर्टिंग आपका यूनिट ऑफ क्वांटिटी है वो आपका बॉक्स ही रहेगा। रेट ऑफ ड्यूटी इट इज नॉट कवर्ड बाय द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी सो राइट नाउ कीप इट ब्लैंक जीरो। ओके आई विल से क्वांटिटी कितना है दैट इज 20 बॉक्स। अब देखिए जैसे 20 बॉक्स कर रहा हूँ नीचे 400 पीसेस अपने आप आ गया। तो कन्वर्जन फैक्टर ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजरमेंट का फंक्शन यही है कि मैं 20 बॉक्सेस को ऑटोमेटिकली पीसेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मुझे पर बॉक्स देना है तो 950 पर बॉक्स कम्स टू 19,000। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम whereby you are passing an entry with the GST. So there is one concept which I recall in terms of the above the line concept and the below the line concept. Here you can see my cursor is stopped just below the 10 ampere one way switch icon. So actually it is asking me that is whether there is any other stock item is available with you. Friends, in the practical accounting, in one invoice, there are multiple stock items will be there. This is just for the understanding. I have taken only one stock item in my journal entry. Otherwise, if you go and try to check it out in the industry, in one purchase item, there are multiple stock items. So if you become accountant, if you having an opportunity to do a job of the account executive, account assistant, and when you are having an opportunity to do an entry of the purchase transaction, then definitely in that purchase invoice, you may find more than one stock item. If I'm having any other stock item, I can definitely try to create the stock item here. I will give the proper information and I will go ahead. So if I, because I'm not having any stock item, I am pressing enter. Once I press enter, you can see the line which is showing here on the left hand side, sorry, on the right hand side, it is gone. It means this is now the below the line. अगर मैं इसको वापस backspace देता हूँ, backspace में मैं 19,000 पे cursor आ गया, एक बार और enter करूँगा, you can see there is a one line which is showing here. Okay, so this is the concept which is above the line and below the line. I will press enter here, so my cursor will be goes down. तो it is asking कि आपका end of list हो गया, तो अगर मैं end of list कर देता हूँ कुछ नहीं होगा लेकिन यहाँ पे मुझे पूछना है बिलो द लाइन कि आपका अगर मेरा एंट्री तो जीएसटी का था यू ऑल्सो रिमेम्बर कि हमें यहाँ पे जीएसटी के साथ एंट्री पास करना था। यहाँ पे मुझे एक्चुअली लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। So as you remember the concept of the GST, I told you the entire transaction is within the state of Gujarat only. So if I mention the 5% rate of GST, that is it represents 2.5% CGST and 2.5% SGST. So let me create the ledger accordingly. So CGST at the rate of 0.5%. What will be the grouping? Just one second. So yes, I have to make it capital. Just 2.5%. And looking for the duties and taxes. Okay, it is asking types of duty. You can see here it is asking the GST. If you don't enable the GST functionality from the F11 function, then this will be not there in your tally track. ये आपके लिस्ट में नहीं दिखेगा। मैंने इसीलिए टैली में जब पहला एंट्री कर रहा था तो एंट्री छोड़ के वापस टैली फंक्शन में जाके F11 में जाके मैंने जीएसटी को एक्टिवेट किया था और एक्टिवेट तो किया हुआ था सिर्फ जीएसटी नंबर डालना बाकी था और ये तभी दिखाई तो मैं यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करता हूँ। It is asking for which type of tax. So obviously CGST represents the central tax. Cost center applicable. I said no. Percentage of calculation. Okay. मैं यहाँ पे zero रखता हूँ. Percentage of calculation नहीं होगी. Round up. छोड़ देते हैं. You can see if 2.5% के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारा फैक्टर सही जा रहा है. तो मैंने कैलकुलेटर ओपन किया कंट्रोल प्लस एड करके 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% कर लेता हूँ. You can see it is perfectly going 475. तो सही है मेरा ट्रांजेक्शन. इसको एस्केप देख अरे पूरा एंट्री चला गया वापस चला गया. तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ. आप देखिए क्या आएगा. बाकी की चीज़ें दे लीजिए. ओके राइट है. So 10 एम्पीयर लॉन्ग स्विच है. बॉक्सेस so बॉक्स 958 का मैं बिलो भी लाइन आ जाता हूँ. तो मैंने सी टेस्ट का रूटीन कवर कर लिया था. फॉर्म देखो क्रिएट करना पड़ेगा.
SGST 2.5%। अगेन ड्यूटीज ऑन टैक्सेस जीएसटी में डालेंगे, टाइप ऑफ टैक्स, ये स्टेट टैक्स है, आपको पता है स्टेट लेवल का टैक्स। बाकी की चीज़ें मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, 475 आ गया। तो इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा टैक्सेस भी आ गया। So eventually my total amount of bill comes to 90,950, which is allowed with GST of 5%, that is CGST 2.5% and GST 5%. So I already made this in items purchase में शॉर्ट में लिखा हूँ, अगर आप चाहें तो पूरा लिख सकता हूँ। This is the invoice number APR 045। डेट है, इसको डेट डाल देता हूँ, तो मेरे पास है, तो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए next. This is the one entry I have done for the purchase. Let me show you the another entry very in the fast mode. मैं एक और एंट्री करूँगा, बाकी की एंट्री आप खुद अपने टेलीग्राम में प्लीज ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ से एक दो परचेज का एंट्री करूँगा, एक दो सेल्स का एंट्री करूँगा, और फिर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जो एंट्री है वो मुझे करना है। लेट मी चेक आउट कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट किसके अगेंस्ट में दिया है, ठीक है। एक तो मैंने अभी परचेज कर लिया, लेट मी शो यू ओके। क्रेडिट नोट है 10 एम्पियर वन वे स्विच पैन मार्क के लिए, 10 एम्पियर टू वे स्विच के लिए डेबिट नोट। मैं ऊपर आ जाता हूँ, 10 एम्पियर टू वे स्विच, ये रहा सेकंड एंट्री। एक सेकंड एंट्री पास कर देता हूँ, 70 से परचेज किया है, पार्टी सेम ही रहेगा इलेक्ट्रिकल। इसको कंट्रोल ले लेके सेव कर रहा हूँ फटाफट जाने के लिए। यहाँ पे मुझे परचेज आइटम परचेज करना है, अगर मुझे नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। 10 एम्पियर टू वे स्विच, कंट्रोल और प्लस सी, ऑटो कंट्रोल दी, and I will go for box. This is if there is a conversion 20 pieces equal to one box, तो चलिए एक रूप में लिमिट ऑफ क्वांटिटी आपको बॉक्स देना है। यहाँ पे अगर आपने पीस ले लिया तो प्राइस वो पीसेस मिलेगा, प्लीज याद रखिएगा रिपोर्टिंग क्वांटिटी आपका लिमिट ऑफ क्वांटिटी क्या है, बॉक्स है। सो कितना बॉक्स परचेज किया, 45 बॉक्स परचेज की। व्हाट इज द रेट, 1050। ओके, मटेरियल लाइन आ जाता है, फटाफट इसको सीजीएसटी लगा लेते हैं, एचजीएसटी लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ वॉइस नंबर डाल देता हूँ, कुछ नहीं डालना है। चलिए फास्ट, यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, डेटेड। चलिए ये एंट्री भी सेव हो गया। एक और परचेस का एंट्री करना है मुझे, मैं ये एंट्री कर लेता हूँ। आई थिंक सो मुझे एक एंट्री स्किप कर लेता हूँ। पैन मार्क का जो आई थिंक सो नीचे दिया है, ये है आई थिंक सो वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर परचेस रिटर्न है तो आपका डेबिट नोट है, सेल्स रिटर्न है तो आपका क्रेडिट नोट है, ठीक है। तो मैंने एक दो एंट्री परचेस से कर ली, एक और एंट्री फटाफट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। एबीआर एबीआर को 80 करना है, उसके बाद पार्टीज नेम, मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे नया स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ये विद कोशिश करता हूँ कि पूरा के एक्टिविटी आपको दिखाता क्या है। बॉक्स दूंगा, ओके दिस इज एंटिटी इज इक्वल टू वन बॉक्स। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हर एक ट्रांजैक्शन में आपको कन्वर्जन सेम दिया है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। maybe in the different entry the conversion factor will be changed. So ये just uniformity यहाँ पे मैंने सेम conversion factor maintain किया है, that is 20 pieces equal to one box. Otherwise it is not necessary कि हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा। The practical life the conversion factor may change along with the entry। तो यहाँ पे 30 box ले रहा हूँ, 20 pieces के हिसाब से 600 आ गया, 600 के हिसाब से 1110 का उसका रेट। So let's take the CGST, let's take the SGST, okay। Then I will just give the invoice number ABR 080 and date I can write down 2020। ये मेरे सेल्स की एंट्री है। इसी तरह से आप बाकी की एंट्री भी कर सकते हैं। मैं आप चाहूंगा कि परचेस की एंट्री हो, परचेस की एंट्री के अलावा मैं सेल्स की एंट्री करना चाहूँगा। यस, यहाँ से
8 तारीख, 8 तारीख को कुछ सेल्स किया है, किसको सेल्स किया है हमने, शिवा इलेक्ट्रिकल्स को। चलिए एंट्री पढ़ना। Five boxes of the 10 in the one switch which containing the 20 pieces per box of rupees 109 per box is sold to the Mrs. Shiva Electricals who had the sales invoice number LS 2021 oblique 101। तो ये एक सेल्स का एंट्री है, परचेस के लिए ऑलरेडी हमने शॉर्टकट की F9 जो वाचर टाइप यूज किया था। आई विल गो फॉर द F8 which is sales। सेल्स के लिए जाते हैं, वो पार्टी अकाउंट वीडियो में अब एक चीज मिस होता है। ये सारी चीजें अननेसेसरी बंद कर देता हूँ, बार बार पूछ नहीं है। होगा कि इसको बेचा है मिसेस सीधा लेके यहाँ भी कॉपी कर देता हूँ, देखना है तो फिर कर लेते हैं मिसेस सीधा इलेक्ट्रिकल्स। इसका बुकिंग आपके यहाँ होगा, समय लेके जाएगा। यस, पेपर पेड पे लिखना है। अब प्रतिदिन वाला जो पार्टी का रेट हमें रेटिंग दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये क्रेडिटर्स को हम कितना टाइम देंगे, सॉरी रिटर्स को 25 डेज का टाइम। बाकी के आइटम सेव करने से पहले यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ। इसके बाद इंडिया भी आएगा, पिन कोड नंबर में सेम डाल रहा हूँ। रेगुलर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे भी दिया हुआ है। Remember the one column of format is here. Yeah. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इसका सेव चलेगा। नो, यस, तो इलेक्ट्रिकल्स आ गया, ये आ गया। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स आइटम, तो तुम मुझे सेल्स अकाउंट नंबर कॉस्ट सेंटर अवेलेबल करना है, नहीं करना है, मुझे कॉस्ट सेंटर अवेलेबल नहीं है। सप्लाई नहीं है, इस सर्विस सॉरी गुड्स कर दे रहा हूँ। कौन सी स्टॉक आइटम हमने शिवा इलेक्ट्रिकल को बेचा है, काम या रेट किया है। सो हमने शिवा इलेक्ट्रिकल को 10 एम्पियर वन वे स्विच बेचा है। जैसे देखते हैं 10 एम्पियर वन वे स्विच मेरे पास है, हाँ है। You can see this is the list of the stock which is showing me on the drop down list on the right hand side. Why it is showing? Because I have already done the purchase entry, and because of that 10 एम्पियर वन वे स्विच right now I am having 20 box। Okay, मेरे पास 20 बॉक्स है, मैं यहाँ पे 5 बॉक्स सोल्ड करूँ। प्राइस क्या है, 109 का प्राइस है। मैं बिलो द लाइन आके अगेन यहाँ भी जीएसटी लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। तो सीजीएसटी आएगा इतना, एसजीएसटी आएगा इतना। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हाँ 5 पीसेज है और 109 रुपये में बेचा। मैं इसका प्राइस ऊपर चेक कर लेता हूँ, कितने में खरीदा। सो 10 एम्पियर वन वे स्विच है, कौन सा वन वे स्विच। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज छोटी सी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक। मैंने उसको 950 में परचेज किया था, तो मैं उसको 109 में तो बिल्कुल नहीं दे सकता। यहाँ पे एक जीरो कम है एक्चुअली, इट इज 1090। ओके, सो 5 बॉक्स को मैं 1090 में बेच रहा हूँ। दिस इज द प्राइस, वहाँ पे जीरो कम था, प्लीज मेक करेक्शन। यहाँ पे मैं उसका इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ, दैट इज माय सेल्स इनवॉइस नंबर। तो सेल्स इनवॉइस नंबर क्या दिया है, वापस एंट्री पे आता हूँ। पीछे सेल्स में हमें हर एक जगह पर आई थिंक सो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 109 है, बाकी की जगह पे तो मुझे दिख रहा है सही, यहाँ पे जीरो लिखना रह गया है। मैं इसका सेल्स इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट क्या था, 2020 और डेट स्टार। अगर एक और आई थिंक सो एंट्री कर देना है, एक और नाइस एंट्री कर देना है। तो इसको किया है नितेश को, तो क्रिएट करना पड़ेगा सेकंड एंट्री। So 15 boxes of the 10 ampere PV switch containing the 20 pieces per box of rupees 1350 per box is sold to the Messrs. This Electricals Private Limited. While sales numbers were go for the participation orders and the space on data. And then we will yes, because they pay 25. This will be yes, cost and capital नहीं करना है। Actually material in the order down, import number 3901
ओके रेगुलर जीएसटी नंबर मैं आपको नीचे से दे देता हूँ निर्देश इलेक्ट्रिकल्स क्या है I have the number of the निर्देश electricals is that with me I just copy paste yes save okay I will come back to the my entry yes yeah here so it is there I will complete my entry first. So then I create two-way switch. I have the 45 box from where I have sold the 15 boxes. The rate will be 150. Okay. GST. GST. मैं इनवॉइस नंबर नहीं डाल रहा हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मेरा एंट्री सेव हो गया ठीक है मैंने दो सेल्स का एंट्री कर लिया है और एंट्री मुझे करना है तो मैं एक एंट्री छोड़ के कर रहा हूँ आई एम डूइंग द एंट्री ऑफ 20